Evening, everyone. How are you? I hope audio and video is okay. Should we start, guys? Please confirm so that I can start. Good evening, everyone. Good evening, Sohini. Good evening, Rajesh. Good evening, Sohini. Okay. Any question before I start the session, guys? Anyone, any doubt, any question? No? Okay. Have you done the part 2 class? Any of you have done the part 2 classes? हाँ जी बताइए बुक्स के लिए राजेश यू हैव टू Rajesh, for the books, you have to check your counselor. Books के guys, everyone, you have to check your. I can't have any books. PT लाए तो books में ही time लगेगा. In fact, I just talked with their VP today. So, Lime का book तो I think they will give in you July also. So I'm not sure books का आएगी. But still you check with your counselor. They'll help you out with that regarding the books. Other than the money question, guys. Guys, voice is not clear. Voice is not clear. Voice is okay. Ruli, fix at your end. I think voice clear है. Lag हो रहा है क्या? Lag हो रहा है क्या video? एक सेकंड. Okay. Wait. Now it should be okay. Yeah. Is there any gap? Is there any gap in the video and the audio? Okay. I was on the different Wi-Fi. ठीक है. ये भी एक चैलेंज है अब से आपका. प्रॉक्टर्ड होने वाला है. रिमोट टेस्टिंग होने वाली है. तो प्लीज ये भी आपको ये सब इश्यूज भी अपने फिक्स करने पड़ेंगे. बिकॉज एक भी अगर जैसे भी आप वाईफाई से आउट होते हो और जैसे भी आपका इंटरनेट बंद होता है योर एग्जाम इज गोना बी फिनिश्ड. स्पेशली लाइक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ इंटरनेट अपनी मर्जी से चलता है. आई डोंट नो कैसे एग्जाम होंगे. तो दिस इज गोना बी अ चैलेंज फॉर अस. About the testing MCQs, मेरा guys, don't worry too much about the MCQs. I was seeing a lot of conspiracy theory online. कह रहे MCQs बहुत complicated होने वाले हैं. नहीं कुछ नहीं होगा. Pretty much the level is going to be too much same in that case. Second good point is our testing is going to start from September. तो 2 महीने पहले टेस्टिंग यूएस वगैरह में देखने को मिल जाएगी. तो आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि किस तरह के एग्जाम के पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विद दैट. तो इट्स अ गुड थिंग कि 2 महीने डिले हो रहा है आपका. तो एटलीस्ट 2 महीने में यूल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन दैट केस. आई हैव रिटन टू ग्लाइम ऑल्सो ऑन दैट कि हाउ दे आर कोपिंग अप विद दिस. जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ग्लाइम क्या कह रहा है. तो ग्लाइम इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग that they are not changing their material. Material will remain more or less the same only. Be it their book, be it their MCQs also. So no change in the GLIME book also. So we can assume everything will remain as it is the same, guys. बाकी let's see कि कैसे एग्जाम आ रहे हैं, क्या पैटर्न होता है. We'll get to know. वैसे भी GLIME का क्वेश्चन का लेवल is much higher than the ये exam, so don't worry on that. Center option going to available. So center option outside India is not going to be there. Saurabh, you have to write it from your home only. Do you still have the option to opt for the offline? No, Kitty. India में or outside US you can't write your exams anywhere else. C scale is 500. तो जैसे हुआ करता था पहले सोहिने, जैसे पहले आपको 105 स्कोर करने होते थे आउट ऑफ 140. अब आपको 500 स्कोर करने आउट ऑफ 800. So it's going to be more on a percentile thing. Okay. But honestly speaking, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Honestly speaking, सोई ना कोई फर्क नहीं पड़ता. आप 105 आउट ऑफ 140 में कुछ नहीं कर सकते थे. आप 500 आउट ऑफ 800 में you can't do much in this case, right? So focus more on the preparation side. We will focus more on the preparation side of it and practice as much as possible. Any question, Rajesh? You have a question? Okay. Any other question? One
140, 130, 130, right? Any other question, guys, before we start? No, MCQs will remain the same, Kirti, as it used to be. Previously, also 100 questions were tested. Out of it, you were rated out of 85. 15 के ऊपर रेटिंग नहीं होती थी. ठीक है, सेम अभी वही रहेगा, कीर्ति, नो चेंज. Can I start with the part 2? Yes, Nikhil. Easily you can start with the part 2. There is absolutely no problem. Which are the exam centers? Vinayak, you're not listening what we are doing here. नहीं है, अब कोई एग्जाम सेंटर्स इंडिया में नहीं है. इट्स अ रिमोट टेस्टिंग. इसका मतलब अब कोई एग्जाम सेंटर इंडिया में नहीं है या इंडिया के बाहर भी कहीं नहीं है. अब यू हैव टू राइट योर एग्जाम सिटिंग एट होम. घर पे बैठ के लोगोगे आपके एग्जाम. ओके, आई एम रिपीटिंग. आई थिंक देयर इज कंफ्यूजन. इट्स ऑफलाइन टेस्टिंग. पहले भी ऑनलाइन हुआ करती थी. फिजिकल टेस्टिंग इज नॉट देयर. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. तो आप घर पे बैठ के आराम से अपना एग्जाम लिख सकते हो. घर पे एग्जाम लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से मस्त आपने बुक खोल ली, यहाँ पे एआई को यूज कर लिया. नहीं, आपके लैपटॉप की स्क्रीनिंग होगी कि आपके लैपटॉप में पहले तो कंपैटिबल है या नहीं. हो सकता है आपकी लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, तो आप ऑल टैप करके यू कांट मूव टू एनी एआई आल्सो. देन दे माइट हैव अ 360 degree camera also. So obviously 1 degree is this you are seeing to me, and then they will ask you to rotate the camera also, so that they can see there is no one behind your back also who is helping you out also. So you might have to have the 360 degree camera. They will ask you to turn the camera also, and you have to look into the camera all the time. आप कहीं इधर उधर नहीं देख सकते, इधर उधर कहीं नहीं देख सकते, आप नीचे भी नहीं देख सकते, आप कुछ नहीं कर पाओगे. You will just look like that only. ठीक है. So this is what is going to be the changes. Rest थोड़े दिन के अंदर और क्लैरिटी मिलेगी. जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी, we'll get to know the lot of things about that. Clear? Vinay, clear? Kitty, clear? Tia, it's for all the exams. So 500 out of 9 Sanjay. Still it is 100 questions. कोई change नहीं हुआ है. Still it is 100 questions. पहले भी 100 थे, still there is 100 questions. Out of 100 questions, they will rate you on 85 questions. 100 questions आएंगे, 100 में से आपको 85 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे. यहां तक क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर दूं, कुछ डाउट है? आउट ऑफ 100 आपको सिर्फ 85 के ऊपर रेटिंग मिलेगी. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट गाइस? 15 क्वेश्चंस. इन 15 क्वेश्चंस के ऊपर आपको रेटिंग नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी मीनिंग्स, नहीं मीनिंग मतलब है दीज आर द एग्जाम, दीज आर द क्वेश्चंस. आईआरएस इज टेस्टिंग यू. तो इसके आपने इसके गलत भी आंसर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आईआरएस ने सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए डाले हैं. ये वाले कुछ नए क्वेश्चन थे तो आईआरएस टेस्ट कर रहा है, तो आपके इनके स्कोर नहीं मिलेगा आपको. अच्छा, व्हेन आई एम डूइंग द क्वेश्चन तब मुझे मालूम होगा कि ये टेस्टिंग वाला है, ये 85 वाला है या 15 वाला है. नहीं, बाय डूइंग द क्वेश्चन आपको नहीं पता चलेगा ये 85 वाला है या 15 वाला है. यू नॉट गेट नो दैट. इट्स मोर लाइक शूटिंग इन द डार्क. इज दैट ओके? ड्यूरेशन सेम ही रहेगी. अभिश्री 3.5 आवर की ड्यूरेशन ही रहेगी. सेम थी जो पहले थी वही अभी भी रहेगी. पहले हुआ करता था 100 एमसीक्यूज होते थे, 50 एक होता था, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता था, फिर दोबारा 50 एग्जाम होते थे. अब नहीं होगा. अब 35 का होगा, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक है, फिर 65 क्वेश्चंस तक होंगे, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक है, देन 100 होगा. Sure, Lalita, I'll speak in English. I'm saying previously there used to be two sets. First 50 questions, then 15 minutes break, then 50 questions, and this is the end of the exams. Now, first 35 questions, then 10 minutes break, then another 30 questions, then 10 minutes break, and then balance questions also. Like this. We'll talk about the exams, guys. We are not discussing it right now. No point doing this right now because we are not writing the exams. We are starting with the part 2. Let's start with the part 2. Any confusion regarding the part 2 beginning, then tell me this. There's no point discussing about the exam right now. You're not writing the exams right now. Anyone any doubt on that first? No? I'll proceed. Any of you have done the part 2 classes earlier? Any of you have done the part 2 classes earlier? Tohine, you have done it? Yogesh?
Anyone who has done it, say that only. You have done all the classes, Yogesh, Sorne? Then you don't need to do it. Don't waste your time in doing the classes again. No point of doing the classes again, because I'm doing pretty much the same thing only. It's better you spend more time in the practice. What I'll do is, what you can do in this case, that you can see the amendment session. In the amendment session, I will have the so I'll keep that. We don't need to do all the classes. I'll do one amendment class where I'll do all the amendments, whatever the amendments are there from 2024 to 2025. So you do that class only, because unnecessarily you will waste your time in, because I'll go as per the speed of the new student. You'll unnecessarily waste your time. Rather utilize this time in doing the practice questions. So this amendment change, I'll do one session, maybe around the mid of May. I'll keep a session where I'll tell you what are the changes in that case. Okay. We need to make the, yes, Rajesh, you need to make the notes. And practice question that you give after the class. I don't give any practice questions. You mean to say MCQs, right, Sonia? Yeah, so you might be using MCQs of Gleim, Soine. So they have already updated those MCQs. So you can use the latest one. They have already updated that. Okay. You have to give mocks through the MCQs portal. Yes, Nikhil. Okay, I'll start it. I think there are many people who are doing the classes for the first time, guys. First, welcome. Few basic point I would say, guys, before we start. We are doing online classes, but please don't do it like a online classes. Meaning, I'm not forcing you to switch on the camera, because many people are coming after the office. You are relaxed. You don't want to switch on your camera, which is absolutely fine. But please sit properly on a chair, table. Sit with a laptop, sit with a pen and paper with you. तो ऐसा मत करना कि आप आराम से लेटे हो बेड के ऊपर and you're watching out on a mobile. It has no meaning. This is absolutely useless exercise. Right? It's better you drop out. Because if you're not doing the classes properly, you're not going to get the worth out of it also, right? ऐसे तो बड़ी सारी YouTube videos है. You guys can see that YouTube videos online also. You paid money for it, then I suggest you to do the classes like a regular classes. Sit on a table chair with your laptop, with your pen and paper, with your calculator, so that I can ask you a question. I can ask you to do any kind of a calculation also. You can ask me the question the moment you face it, guys. ठीक है, तो प्रॉपरली कीजिएगा क्लासेस गाइस. ऐसे बैठ के लेट के आप करोगे बेड के ऊपर, यू विल नॉट फाइंड एनी वैल्यू आउट ऑफ इट आल्सो. सेकंड, द मोमेंट यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी देन एंड देयर. Don't expect के let the topic be finished, then I'll ask my question. Please don't do that. With this, you are just going to hurt yourself only. Please ask me that point. If it is not clear, I'll ask me then and there. When I'm asking any query, please be responsive in that case, because the more you are going to type on the chat box, I understand that you are getting what I'm trying to communicate with that also. So please be involved in the class, be engaged in the class. It's chat is the only way for us to communicate. The more you're going to chat with me, the more I'll understand that whether you're getting the topic or not, guys. So let's have a better engagement. आपका जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी. व्हाटएवर द क्वेश्चन आई एम थ्रोइंग एट यू, प्लीज आस्क मी दैट आल्सो. यस सौरभ, यू कैन आस्क एंड स्पीक नहीं हो पाएगा सौरभ. रीजन बीइंग, वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो बिकॉज ऑफ दैट कई बार ऑडियो रिकॉर्ड होगी, फिर आपको व्हेन यू आर व्यूइंग इट एट अ लेटर स्टेज आपको बहुत सारी अननेसेसरी बैकग्राउंड में साउंड सुनाई देगी. So that's why for better future viewing for you, we don't allow the mics. तो आप लिख के पूछ सकते हो सौरभ. Yes, Rajesh, it should be available. Last question, can I do recording classes after the last video? Can you record class? Yes, Nikhil, you can do that also. Yes, Rajesh, it will be available also. Okay. We are going to talk about the enrolled agent. And in this, we are going to talk about the taxation.
Which kind of a taxation we are going to discuss here? We are going to talk about here income tax. In US, there are three types of a income tax, guys. There are three kinds of a income tax in US. First is going to be federal income tax. Second is going to be state income tax. Third is going to be local income tax. ठीक है, जिसमें होता है city and county income tax. Are we going to do all of the income tax? No. Enrolled agent is all about federal income tax. Federal is more like a center, guys. ठीक है, तो federal income tax. US, how many states US have, guys? 52 states. 50 states you are having it. We are not going to do the state taxation. Almost 42 states have the state taxation. Almost 7-8 states, they do not have the state taxation. So it's humanly impossible for you to know the income tax of 50 states in that case. So obviously in our course also, we don't have the enrolled agent. In the enrolled agent, we don't have the state tax. We will not do the local taxes. We will be focusing more on the federal income tax. Is that okay, guys? Besides federal income tax, I will be doing with you gift tax, state tax, social security taxes, net investment taxes, kiddie tax. So besides that, there are few more additional taxes I will discuss here also. Okay? Depends, Anirudh. Depends. Maybe हो सकता है in your state there is no income tax. In your cities there is no income tax also. So not necessarily all of it. जैसे if I talk about New York City, New York City has their own income tax, but हर city का नहीं होता. हर city का income tax नहीं है. तो हो सकता है in the state where I'm staying there is no state tax, there is no local tax. So I will file only federal income tax. ठीक है? Point clear? Now, one more point. Please do not connect this with India. अरे इंडिया में तो ये होता है, यूएस में ऐसा क्यों नहीं होता? अगर इंडिया में ऐसा होता है तो यूएस में क्या होगा? No connection. Wherever there is any kind of a connection, I will tell you. Fortunately, unfortunately, I'm also Indian chartered accountant. तो जो भी होगा, जहां भी connection होगा, I will tell you that only. अपने तरफ से time waste मत कीजिएगा. Else you will not listen. आप हमेशा कंपैरिजन वाले मोड में रहोगे, इंडिया में ऐसा, यूएस में ऐसा. Please don't do that. Else you will not listen to me. So please just listen to me. If you just listen to me, you will understand everything. Don't link. There is absolutely no connection. जहां भी थोड़ा बहुत connection है, I will keep telling you that also, guys. ठीक है? I will start with you part 2. Part 2 में we will discuss the business entities, business taxation. US में, guys, there are two kinds of a majorly business entities, guys. I am telling you the bucket of the entities. I will telling you the broad categories of the entities. दो तरह की entities होती है, guys, US में. First is going to be DT. DT का मतलब है double taxed entities. Double taxed entities. Second kind of an entity is known as PT. PT is pass through entities. There are two kinds of entities. Double tax entity, pass through entity. Double tax entity, क्या लगता है? नाम सुन के क्या लगता है? How many times are you charging the tax? How many times you are charging the tax? सुन के ही लगता है यार. It's a double taxation. No, taxes are going to be levied twice. So first, the company will have the profits. Company will make their P&L. Company will say, this is my sales, this is my cost, this is the advertising I'm doing it, this is the rent I'm paying it. And then comes your PBT, profit before tax. On this PBT, is the company going to pay the tax? Yes, company is going to pay the tax on it. And uske baad jo aaya, which is profit after taxes, you are going to give it to the shareholder. Is shareholder going to pay the tax on it?
shareholder is also going to pay the tax on it. So once the tax is levied here, second, the taxes are levied here. So taxes are levied twice. Taxes are levied twice. That is why we call such kind of an entity as double tax entities. Is this point clear or not, guys? Yes, no, maybe. इंडिया में हम डबल टैक्स का कॉन्टेक्स्ट दूसरा समझते हैं. इंडिया में कॉन्टेक्स्ट भी अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर ही दो बार जब डबल टैक्स लगता है उसको करते हैं. यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में हम कह रहे हैं कि बॉस एक बार तो कंपनी के हैंड में लगा, दूसरी बार शेयर होल्डर के हैंड में लगा. वी विल कॉल दिस कंपनी एज डबल टैक्स एंटिटी. सी कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ सच कंपनीज. सी कॉर्पोरेशन नाम है किसी तरह की कंपनी का, जैसे इंडिया में होता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. सिमिलरली वन ऑफ द सच कंपनीज इज नोन एज C corporation, guys. So C corporation is a double tax entity. Any question up till here, guys? Any doubt? Anything not clear? Should I repeat? Second kind of an entity, guys. Again, second entity is the same thing, pass-through entity, but they will also do the same thing. This is my sales, this is my cost, this is my profit before the taxes. No, C corporation. Profit before the taxes. This company, this entity is not going to pay the taxes. They will give all the profits. They will give all the profits to their shareholders. Shareholder are going to pay the taxes on it. So taxes are levied. How many times the taxes are levied, guys? Once. Once. यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ लगा. This kind of an entity is known as pass-through entities. Pass-through entity means that you are passing on everything. आप अपने सारे profit pass on कर रहे हो. You are passing on your losses also. You are passing on everything to your owner. This is why it is called pass-through entity. For example, partnership is one of them. Partnership firm does not pay the taxes. They pass on everything to whom? किसको देते हैं ये सारी चीजें? They pass on everything to the partners. So partnership does not pay the taxes. Partnership firm does not pay the taxes. Partner pays the taxes. ठीक है? This is again pass through. You mean to say, Saurabh, in case of a pass through? In case of a pass through बोल रहे हैं? In case of a pass through, you're saying, right? हाँ, same. In pass through में कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है. I'll talk about that later, Saurabh. डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, अर्निंग बेसिस पे टैक्स लगता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर है गाइस? So we discussed about the double tax entity. We talked about the pass-through entity. Double tax entity में taxes are levied two times. One at the corporation level, second at shareholder level. Pass-through entity taxes are levied only once. It is paid by the shareholder, owner of the company, not by the company itself. ये बात क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक गाइस? पीटी क्या पास थ्रू एंटिटी का बताया ना, एस कॉर्पोरेशन. पास थ्रू एंटिटी is more like a S corporation, partnership. These are the pass-through entities. Clear? LLC also. Clear, guys? Any question? S corporation, limited liability company. Limited liability company. I'll talk about this. Limited liability company. इतना अजीब नाम क्यों है? सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन. व्हाई सच अ वियर्ड नेम? व्हाई सच अ नेम? सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन. इंडिया में आपका जो मदर एक्ट है, इंडिया में जो आपका मदर एक्ट है, which used to be Income Tax Act 1961. अब वो रिप्लेस हो गया, नया वाला आ गया आपका. ठीक है. यूएस में वी फॉलो IRC, इंटरनल रेवेन्यू कोड. इज दैट ओके? तो जैसे इंडिया में होता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, यूएस में है IRC. इज दैट ओके?
इंडिया में हु गवर्न्स योर इनकम टैक्स एक्ट? विच डिपार्टमेंट गवर्न्स? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। यूएस में होता है आईआरएस। आईआरएस जो आपके एग्जाम भी लेता है, आईआरएस स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ये बात क्लियर है गाइस? पॉइंट क्लियर? Why do we call C corporation S corporation? Because C corporation is defined by subchapter C of IRC. If you go to subchapter C of IRC, you will find this corporation. If you go to S corporation, this is defined by subchapter S of IRC. Is that point clear? जैसे इंडिया में you might have heard about section 80C. Have you heard about section 80C? This comes under which chapter? Under which chapter does it come? It comes under chapter 6A. अब चैप्टर 6A क्या है? अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोलोगे, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट खोलोगे, you go to chapter number 6A. 6A में you will find 80C. Similarly, guys, if you go and open IRC and you go and open subchapter C, you will find C corporation. If you open subchapter S, you will find S corporation. Partnership firm. Partnership firm is defined by subchapter K. Okay, but we don't call it K corporation. Easy for you to remember. CSK, Chennai Super King. You can easily remember that. Point clear, guys, everyone? Any question till now? कुछ repeat करना है, guys? Anything to repeat? Kirti, question. Guys, question. PF stands for partnership firm. Surya, question. Umang, question. Sunil. Guys, any doubt, please पूछ लीजिए. Rupa. Board name of US. Board name like a CBDT, Rajesh, is IRS, Internal Revenue Service. जैसे जो आपका एग्जाम लेगा, राजेश. नो क्वेश्चन. रोली, निखिल, निमेश, ठीक. आयशा, नहीं, ठीक. I'll be starting a topic. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है गाइस. नॉर्मली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट करने में रिस्क रहता है, but I'm ready to take that risk. I'll be talking about corporate distributions because people are doing it first time, so they'll take time. We'll talk about that, Nimesh. बड़े सारे corporation होते हैं, C corporation, S corporation, LLCs. We'll talk about them going forward. Entities है, आप अपने आप को पार्टनरशिप भी बना सकते हो, कंपनी भी बना सकते हो. We'll talk about that. Majorly 7 to 8 types होंगे. We'll talk about corporate distributions. Very, very important topic and extremely complicated topic. अभी इतना complicated नहीं है. I will need this topic. अभी we are doing this topic in class number 1. Same thing I will do with you in class number 22 and 23. तब तक आप सब कुछ भूल चुके होंगे. ठीक है, तब मैं आपको वापस बोलूंगा, प्लीज एक बार जाके वापस रिवाइज करना. आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये. ठीक है, तो इसका रेलेवेंस हमें आगे जाके भी पड़ेगा. प्लीज आराम से सुनिएगा इसको ना इंडिया से लिंक करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट लॉ गाइस. ठीक है, लेट्स डू इट. Before we further move, guys, before I discuss about the corporate distributions, I want to talk about a topic which is very, very important in EA also and in CPA also, which is known as basis. Basis क्या होता है, guys? What do you mean by basis? Basis in a very simple way is nothing but your cost. Basis is your cost. So that means if I purchase, let's say अगर मैंने 100 stocks purchase किए, ठीक है, I purchase 100 stocks of Tesla
at the rate $10 per stock. What is my basis, total basis? My total basis is going to be $1,000. Basis is going to be $1,000. Is it possible? Is it possible that my basis is negative? Possible that basis negative? Like basis can never be negative. Can basis be zero? Zero हो सकता है, negative नहीं हो सकता. बिल्कुल. I'm just writing a note for this. Basis can never be negative. However, it may be negative. हो जाएगा क्या? सुनिए, गिफ्टेड में नेगेटिव होगा क्या? सुनिए, गिफ्टेड में भी जीरो नहीं होता. हम करेंगे गिफ्ट को भी बाद में करेंगे. यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप पावर पॉइंट पे डाल सकते हो, एम्प्टी पावर पॉइंट में, ताकि अलाइनमेंट नहीं लेगा आपका. बोनस शेयर्स नहीं होता. हम करेंगे. सॉरी, कॉपी. I think go back to the same example, guys. I purchased 100 stocks and I purchased total basis is $1,000. If I sold these 100 shares, for $1,000, what is going to be my gain or loss? बिल्कुल, my gain or loss is going to be zero. आप कहोगे your selling price is 1,000. Your basis cost is 1,000. So eventually this is going to be zero. बिल्कुल ठीक बात है. बट मान लीजिए ये अगर मैं यहाँ प्लॉट करूं, this is my cost, this is my basis. तो cost भी हो गई 1,000 and this is 1,000. selling price तो जीरो हो गया. बिल्कुल. जिसको भी आपने बेचा उसका दिल पिघल गया. उसने कहा चलो $200 और ले लो आप. नाउ व्हाट इज योर गेन? करेक्ट. योर गेन इज 200. सिंपल. तो कैन आई से इन अ डिफरेंट वे गाइस? once I recover my basis, anything on the top of it is my gain. Can I say that? इस केस में I have recovered my basis. इसके ऊपर जो मिला मुझे, ये जो छोटू सा टॉप मिला मेरा, this is nothing but my capital gains. Guys, I hope it is okay. Point clear, guys? Yes, no, maybe. I'm writing the same thing. I'm writing the words only. Once basis is recovered or becomes zero, anything on the top of it shall be yours. Done. Copied. Now, the topic which I was starting was something else. याद है क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे हम लोग? मैंने कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहीं और चला रहा. We are going to good Harsh, good Nikhil. We were discussing about the corporate distributions. हम कहीं और चले. Corporate distributions.
whenever company gives anything to their shareholders, company gives to the shareholders, what do you call that? Company gives to the shareholders, what do you call that? Dividend. हम typically उसको dividend बोलते हैं. US में we don't call it dividend. We call this as corporate distributions. ठीक. अब किसकी बात कर रहा हूँ अब मैं? Am I talking about C corporation, S corporation, partnership? नहीं. I'm talking about C corporation now. ठीक है. अभी मैं S corporation partnership नहीं बात कर रहा हूँ. I'm talking about C corporation. Going forward, अब जो conversation करूंगा मैं सिर्फ C corporation की I'll talk about, guys. So whenever C corporation is giving the dividend distribution to their shareholder, we will call it distribution. This is not going to be the dividend. We are not going to call it the dividend. Is this point clear, guys? Everyone? Yes, no, maybe. What we are going to do, guys, whatever the distribution you are making, whatever the distributions company is making, we are going to put it into the 4 buckets. Okay? Maybe distribution you are giving is $1,000. I'll put it into 2 buckets. Maybe पहली bucket के अंदर I put it 200. Second bucket I put $100. Third bucket I put maybe $400. How much is left? 300 is left, right? 300 is left. So that's how I'm going to allocate. कैसे होगा क्या होगा I don't know. We will see that. ठीक है. I have classified the entire 1000 into 4 buckets, and first 2 buckets is going to be my dividend. So in this question, what is your distribution? What is your distribution? Distribution. Distribution. Distribution is 1000. Distribution is 1000. But out of 1000, 300 is taxable dividend. क्या ये बात clear है? Out of those 1000, 300 is going to be dividend. Point clear? Kirti, point clear? ठीक है. How to classify? We'll talk about this now. कैसे classify करना है? I'll talk about this, guys, now. ठीक है? चलिए, let's go. First, let's. Whenever company makes the distributions, guys. Let's say company has made the distribution of $1,000. First and foremost, you are going to look in this case, how much is the current year? How much is the current year earnings and profits company is having? That means maybe company has given the distribution in the, मैंने कहा था कुछ पोर्शन नहीं बोलते, ठीक है. अगर 2025 में आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, तो 2025 में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से 1000 दिया है. कंपनी का करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स क्या है? व्हाट इज करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट? इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक अ पैट. ठीक है. पैट इज मोर अकाउंटिंग, करंट ईयर अर्निंग्स इज प्रॉफिट्स इज मोर टैक्स कॉन्सेप्ट. तो मान लीजिए यहाँ पे करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट आता है $100. इज दैट ओके? पॉइंट क्लियर? व्हाट इज करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट? तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू लुक what is the company's earnings profits. PAT is profit after taxes. मतलब मनोज सीधी बात है, 2025 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इन 2025. हाउ मच करंट ईयर प्रॉफिट कंपनी हैज अर्नड, मनोज. दिस इज व्हाट वी कॉल इट करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट. पॉइंट क्लियर, मनोज? गाइस, पॉइंट क्लियर? पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. रेलेवेंट नहीं है आपके लिए. अकाउंट्स में यूज करते हैं, मुझे लगा आपको पता होगा इसलिए मैंने बताया. अकाउंट्स में यूज करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. जरूरत नहीं है इसकी यहाँ पर आपके लिए. सीधी बात है मनोज. Whatever the profits you have earned in the current year, we are going to look this first. Is that okay? Point clear, guys? Second, what we are going to look here is accumulated earnings and profits. Accumulated earnings and profit. This is very similar जो आप अगर अकाउंट्स में जिसमें पढ़ा है
सिर्फ उसी के लिए है ये रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स सभी को समझ में आता है। रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, दैट थिंग। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक कि व्हाट इज योर करंट ईयर्स अर्निंग्स एंड प्रॉफिट। तो अगर 2025 में यू आर मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मच यू हैव अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, then we are going to look how much accumulated profits you are having. Is that okay? Kirti, point here, guys, point here. Yes, no. Third thing we are going to look, what is the shareholders basis. We are going to look here what is the shareholders basis. Shareholder का basis किस चीज का guys? Basis of what? Shareholders basis of what? Of what? Basis of stock. Basis of stock. अब इस शेयर होल्डर को, मान लीजिए एक ही शेयर होल्डर है, अगर ये शेयर होल्डर है तो हाउ यू बिकम द शेयर होल्डर, हाउ यू बिकम द शेयर होल्डर, आपने कभी पैसे दिए होंगे ना, एंड वंस यू गिव दैट मनी दैट बिकम्स योर बेसिस। तो थर्ड वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज योर बेसिस। इज दिस पॉइंट क्लियर पीपल व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, दिस इज द three classification you are going to do. This is the three classification we are going to do. Let's do one question on that. For example, अगर मेरा distribution is $1,000, my current year earnings and profit is $100, accumulated is 200, shareholders basis is 400. ठीक है, let's do it. First, how much is my current year's earnings and profit? Correct, 1,000. तो this 1,000 पहले मैं allocate करूंगा जो भी बेसिस है ना, आप अकाउंटिंग में फंस गए सौरभ ना, बेसिस में इंक्लूड प्रीमियम पेड ओवर पार। आप किस पे खरीदते हो शेयर? आपने जोमेटो का शेयर खरीदा 72 का, आप पार पे खरीदते हो क्या कोई भी शेयर? आप शेयर पार वैल्यू पे खरीदते हो? आप अकाउंटिंग में कहां फंस गए? पार, डिस्काउंट, सारे शेयर आप जिस जिस सिंपल कॉमन सेंस है ना, जितनी प्राइस पे आपने शेयर परचेज किए आप अकाउंट्स में चले गए। करंट ईयर आपका है $100। सुन लीजिए सौरभ, आपको नहीं समझ आएगा अदरवाइज। पहले 100 आया, करंट ईयर्स अर्निंग्स एंड प्रॉफिट में आई हैव टेकन 100। सेकंड, हाउ मच इज accumulated earnings and profit guys? 200. Third is return of basis. जितना बेसिस है उसको रिटर्न कर दिया। कितना बेसिस है आपका? $400। तो $400 को मैंने रिटर्न कर दिया, रिडक्शन ऑफ बेसिस बोलते हैं इसको, which is $400. How much is left? $300. We are left with $300. अब 2 मिनट listen to me what we are doing here. ठीक है, what we are doing here guys, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया आपने? डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया आपने? $1,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया आपने $1,000। अब इसमें से व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट कि बॉस डिविडेंड कितना है। इस डिविडेंड पे हु विल पे द टैक्स? इस डिविडेंड पे हु विल पे द टैक्स? नहीं नहीं नहीं, whenever company is giving the dividend, डिविडेंड पे तो शेयर होल्डर ही टैक्स पे करेगा ना, डिविडेंड पे तो शेयर होल्डर ही पे करेगा। कीर्ति, इस पे ये जो प्रॉफिट है इस पे कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, तो एक टैक्स कंपनी ने पे किया, डिविडेंड पे शेयर होल्डर पे करे। दिस इज ऑलरेडी टैक्स प्रॉफिट्स ना कीर्ति, तो इसलिए डिविडेंड पे ओनली शेयर होल्डर इज गोइंग टू पे द टैक्स। गाइस, पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो, मे बी? गाइस, एनी डाउट? शुड आई रिपीट? जैसे इंडिया में होता है कि कोई रॉकेट साइंस थे, जैसे इंडिया में भी तो यही करते हो आप। टीसीएस ने अगर आपको डिविडेंड दिया तो टीसीएस ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया उसके ऊपर, अब आपको टीसीएस ने दिया डिविडेंड तो आप टैक्स पे करते हो उसके ऊपर। तो सेम चीज है यहाँ भी, बस इसको हम डबल टैक्स बोलते हैं यूएस के अंदर। एग्जैक्टली सेम चीज हम इंडिया में भी करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है गाइस? ठीक है, बट द पॉइंट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि कंपनी हैज मेड द डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी ने, हम डिविडेंड नहीं बोलते, कंपनी ने किया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,000। तो इन दिस 1,000 वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बॉस डिविडेंड कितना है।
Why do we need dividend? We need dividend so that shareholder will pay the tax on it. यहां तक बात क्लियर है गाइस? Yes, no, everyone? अब यहाँ पे IRS has suggested a very weird method. IRS has suggested a very weird method. IRS says कि बॉस पहले फाइंड आउट करो कि कंपनी का करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट कितना है. आपने कहा करंट ईयर का अर्निंग है प्रॉफिट है $100. ठीक है. IRS कहता है आप पता करो कंपनी का कितना पाइल्ड अप प्रॉफिट है. हाउ मच इज द पाइल्ड अप प्रॉफिट फॉर द कंपनी. दैट मींस हाउ मच इज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर द कंपनी. किसका निकाल रहे हैं ये करंट ईयर और अक्यूमुलेटेड किसका निकाल रहे हैं गाइस. शेयर होल्डर और द कंपनी. कंपनी. कंपनी शेयर होल्डर का नहीं. वी आर सेइंग कंपनी. आपने कहा दिस इज $200. तो IRS कहता है जितना कंपनी का नहीं. इज देयर नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अदर देन द डिविडेंड. कंपनी कहती है शेयर IRS कहता है कि जितना भी करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट है, जितना भी आपका अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स एंड प्रॉफिट है, अप टू दिस मच अमाउंट इज गोइंग टू बी योर डिविडेंड. ये बात क्लियर है? तो इज कंपनी गोइंग टू पे द टैक्स ऑन $300? नहीं. इट इज जस्ट अ वे ऑफ बेंच मार्किंग. ये सिर्फ एक बेंच मार्किंग करने का तरीका है. मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ. मान लीजिए यू आर डूइंग अ जॉब. ठीक है. And you are earning, let's say, $1,000. Your father is doing work also. Your father is also doing a job. Let's say he is earning $200. ठीक है. You are earning 1,000. Your father is earning 200. आपने सोचा है जितने मेरे father is earning, whatever my father is earning, that much money I will put into mutual fund every month. ये बात क्लियर है? You decided कि जितने भी मेरे father earn कर रहे हैं उतना मनी आई विल पुट इट इनटू द म्यूचुअल फंड. हाउ मच मनी यू विल पुट इट इनटू द म्यूचुअल फंड? 200. बिल्कुल. इज योर फादर पुटिंग दिस $200 इन द म्यूचुअल फंड ऑन योर बिहाफ? नहीं. योर फादर इज नॉट पेइंग दिस. नहीं. इज जस्ट अ बेंचमार्किंग आपने कर रखी है कि बॉस जितने मेरे फादर कमा रहे होंगे ना उतना मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगी. इट इज जस्ट अ बेंचमार्किंग फॉर यू. ये बात क्लियर है गाइस? सिमिलरली हियर ऑल्सो distribution company is doing to the shareholder. आप ही को टैक्स पे करना है. शेयर होल्डर हैज टू पे द टैक्स ऑन इट. इज जस्ट अ लॉ. लॉ सेज जितना करंट ईयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट है, जितना अक्यूमुलेटेड है, दिस इज गोइंग टू बी द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस. यस, नो, मे बी. यहां तक क्लियर है? निखिल क्लियर है? पॉइंट क्लियर है गाइस? एनी डाउट प्लीज आस्क मी नाउ. तो इस केस में $300, इस केस में $300 आपका हो गया टैक्सेबल डिविडेंड. हु विल पे द टैक्स ऑन $300 गाइस? shareholder. Obviously shareholder is going to pay the tax on it. I hope it is okay. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन कितना था गाइस? हाउ मच वाज द डिस्ट्रीब्यूशन? 1000. 1000 में से हाउ मच इज द टैक्सेबल डिविडेंड? 300. कितना बच गया? हाउ मच इज लेफ्ट? हाउ मच इज लेफ्ट गाइस? ये तो बहुत बच गया. 700 बच गया. किसको मिला ये 700 भी? 700 अभी भी शेयर होल्डर के पास है. अब क्या करें? आईआरएस कहता है तीसरी चीज चेक करो कि इस शेयर होल्डर का, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का बेसिस कितना था. बेसिस मतलब कॉस्ट कितनी थी इसकी गाइस. लेट्स से बेसिस ऑफ दिस शेयर होल्डर इज 400 ले. चलो 400 ले लो. बेसिस इस शेयर होल्डर का था 400. बेसिस था 400. बेसिस समझ आ गया गाइस? दैट मींस इस शेयर होल्डर की कॉस्ट थी $400. अब थर्ड थिंग आईआरएस केस सेज कि ये समझ लो कि ये पैसे शेयर होल्डर को वापस कर दिया आपने. दैट्स व्हाई रिडक्शन ऑफ द बेसिस. रिडक्शन ऑफ द बेसिस आपने कर दिया. शेयर होल्डर को पैसे वापस कर दिए उतने आपने. तो तीसरा आ गया मेरा रिडक्शन ऑफ द बेसिस. ये बात क्लियर है गाइस? यस, नो, मे बी. तो 300 400 मैंने यहां अलोकेट कर दिया गाइस. इज दिस गोइंग टू बी टैक्सेबल? नहीं. अब कितना बच गया गाइस? हाउ मच इज लेफ्ट? 300. एक बात बताइए, सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे. इससे पहले मैं वापस आता हूँ इस वाले पॉइंट से पहले. इस वाले पॉइंट से पहले आपका था, इस वाले पॉइंट से पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन था 1000. 300 आपने अलोकेट कर दिया डिविडेंड में. 700 वाज लेफ्ट. आपने ये क्यों नहीं किया? 400 माइनस 700
-300 कर सकता हूं मैं बेसिस, -300 कर सकता हूं बेसिस, बेसिस। इसलिए हमारा पहला वाला नोट था, बेसिस कैन नेवर बी नेगेटिव, बेसिस नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अब जो मुझे बेसिस के ऊपर मिल रहा है वो क्या चीज है गाइस? बेसिस के ऊपर जो मेरे को एक्स्ट्रा $300 मिल रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जैक्टली माय कैपिटल गेन्स, दिस इज माय गेन्स, जो है आपका नोट नंबर 4। आई होप इट इज ओके। This is the sequence we are going to follow, guys. This is the sequence we are going to follow. First is going to be current year's earnings and profit. Second is going to be accumulated earnings and profit. Third is going to be reduction of the basis. Fourth is going to be gains. This is the waterfall we are going to follow. लॉ में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। व्हाट आई हैव डन, इसी पूरे सभी चीजों को मैंने एक स्टेप्स में बना दिया है, सो इट्स गोइंग टू बी मच इजियर फॉर यू टू डू इट। वी विल do extensive for it. हम इतने questions करेंगे which you can't even think of that also. So don't worry, we'll discuss all the scenarios. Short लिख लेते हैं यहीं पर एक ही जगह। Current year earnings and profits. Accumulated earnings and profits. Reduction or basis. ये तो गेन्स है। Shareholder will pay the tax on this. मैं करूंगा ज्योति, एक मिनट में। Take a screenshot, I'll go back. Sure. Let me know once you're done. हर चीज अकाउंट्स की होती है ना सौरभ। रिजर्व्स तो अकाउंटिंग है ना, रिजर्व्स तो अकाउंटिंग है, फंड्स अलग चीज होती है। इट कुड बी योर डेट आल्सो। देयर कैन बी सिनेरियोज आल्सो, जस्ट टू आंसर योर पॉइंट सौरभ, देयर कैन बी सिनेरियो जब आपका करंट ईयर भी कुछ ना हो, जीरो हो, अक्यूमुलेटेड भी जीरो हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, स्टिल यू कैन मेक द डिस्ट्रीब्यूशंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन। ठीक है, विल ट्राई टू क्वेश्चंस लाइक हियर। अच्छा, आंसरिंग द पॉइंट फॉर ज्योति इन दिस क्वेश्चन। ज्योति, क्या लोकेशन किया हमने ज्योति? अब यही लिख लेते हैं उसको। We have done, this was 100, this was 200, this was 400, and this is 300. What is going to be taxable, guys, for the shareholder? This is going to be taxable, this is going to be taxable, this is non-taxable. Reduction of the basis is non-taxable, gain is going to be taxable. तो ये दोनों taxable होंगे as a dividend. These guys, this is going to be taxable as dividend, this is going to be taxable as capital gains. Point clear what I'm saying? Jyoti, clear? एक बार कॉपी कर लीजिए, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। आई नो शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, 2 मिनट दीजिए मेरे को बस। कॉपी। अब गाइस, पीपल हु हैव मिस द ट्रेन आल्सो, एक बार साथ में करना मेरे साथ प्लीज। चुप रहने से नहीं समझ आएगा गाइस, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, चुप रहने से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आज हम बहुत ही बेसिक क्लास करेंगे, कल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो प्लीज मेरे से सवाल पूछ ही लीजिए, एक साथ में कीजिएगा मेरे। अब कुछ भी कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। Current year's earnings and profit is 10,000. Accumulated earnings and profit is 5,000. Shareholder का basis is 8,000. ठीक है, साथ में करेंगे। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा इस चीज को, चलो साथ में कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन
पहले है करंट ईयर्स अर्निंग्स एंड प्रॉफिट, देन वी आर हैविंग अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स एंड प्रॉफिट, थर्ड वी आर हैविंग रिडक्शन ऑफ द बेसिस, फोर्थ वी आर हैविंग कैपिटल गेन्स। ठीक है, आई विल डू मल्टीपल सिनेरियोज विद यू गाइस। ठीक है, साथ में देखना प्लीज मेरे। फर्स्ट सिनेरियो, स्टॉप राइटिंग, पहले सुनना मेरी बात आप आराम से। हाँ, distribution is $15,000. Distribution is $15,000. First, I allocate to current year's earnings and profit, then accumulated, then reduction of basis, और कुछ बच गया तो capital gains. इस केस में how much you are distributing? You are distributing $15,000. Clear है guys? Where should I allocate first? Where should I allocate first? Current year earnings and profit कितना डालूं आप बताओ? पूरा डाल देंगे 15,000, राइट? शुड आई नॉट पुट फुल 15,000? नहीं है ही नहीं तो मैं कैसे डाल सकता हूं? नहीं है ना, 10,000 जाएगा। हाउ मच इज लेफ्ट? हाउ मच इज लेफ्ट? 5,000 इज लेफ्ट। कहां जाऊं? वेयर शुड आई गो? एईपी, बिल्कुल। रिडक्शन ऑफ बेसिस कितना? 8,000। क्यों 8,000 है ना? है 8,000, है 8,000 हरिओम, बट खत्म हो गया ना। 15,000 यहां लोकेट कर दिया, यहां लोकेट गया, फिनिश। अब जब फिनिश है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, फिनिश। आपको डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है याद से। इज दैट ओके? पॉइंट क्लियर गाइस? कैपिटल गेन्स वुड बी हाउ मच? नथिंग। खत अलोकेट हो गया ना एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, तो कुछ नहीं होगा, जीरो जीरो। आई होप इट इज ओके, पॉइंट क्लियर गाइस? कोई भी डाउट? आई डू मेनी क्वेश्चन, बट आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा प्लीज। इस केस में टैक्सेबल डिविडेंड कितना होगा गाइस? हाँ, बीआई में पूछ रहा हूँ, आप बताओ। करेक्ट, दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल डिविडेंड, बिल्कुल ठीक बात है। तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल डिविडेंड। आई होप इट इज ओके, पॉइंट क्लियर? चलिए साथ में करते हैं, सेकेंड पॉइंट करते हैं। $20,000 कहां डालू मैं पहले? करेंट ईयर में हाउ मच? 10,000। हाउ मच इन द अक्यूमुलेटेड? 5,000, वेरी गुड। रिडक्शन ऑफ बेसिस इज 8,000। 8,000 आएगा ना? आप डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के चलो, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ही 5,000 है। कैपिटल गेन्स नथिंग। टैक्सेबल डिविडेंड, हाउ मच इज टैक्सेबल डिविडेंड? गुड ज्योति, 15,000। नहीं, 15,000 रहेगा। दिस प्लस दिस रहते हैं पहले दो। क्लियर योगेश? क्लियर? लेट्स डू इट। थर्ड, $25,000। आपको कैपिटल गेन्स बताओ मुझे, हाउ मच इज कैपिटल गेन्स? बहुत सिंपल है, अलोकेट कीजिए साथ में। 10,000, 5,000, 8,000, whatever is the balancing figure, 2,000। टैक्सेबल डिविडेंड सेम रहेगा, 15,000। चलिए, 35,000 कैपिटल गेन्स बताइए। 10,000, 5,000, 8,000, कितना बचा मेरा? 12,000 बचा ना? 12,000। क्लियर है योगेश, ज्योति? जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी आप, जो भी वट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर वुड बी देयर। गाइस क्लियर? ज्योति क्लियर? क्वेश्चन गाइस प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लीजिए अभी। नहीं, चलो एक क्लास करेंगे। $100,000, $100,000 कितना कैपिटल गेन्स है?
इजी. 10, 5, 8, 7. बिल्कुल ठीक. गाइस क्लियर है? कुछ मैं वैसी वैल्यूज भी करता हूँ आपके साथ में, अप्रोक्सीमेट वैसी, नॉट एग्जैक्टली द सेम वैल्यूज. हाउ could we get a value? Meaning, how could we get values to which values to name? We'll discuss ना. ये समझ आया सुनील हमने क्या किया? We'll discuss questions भी करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ऐसे, ऐसे भी कर सकते हो अनिरुद्ध, पर अनलेसली बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इसकी बात ऐसे. चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज 3000 गाइस. डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज 3000. व्हाट इज कैपिटल गेन्स? व्हाट इज टैक्सेबल डिविडेंड? पहले करते हैं, कहाँ डालू? करंट ईयर में कितना डालू? करंट ईयर में कितना डालू? 3000. क्यों? करंट ईयर तो 10,000 है ना, 10,000 करेंगे ना. 10,000 नहीं करूंगा. आप डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा नहीं जा सकते ना. 3,000 है, बाकी का जीरो जीरो जीरो. गुड पॉइंट. 13,000 is the distribution amount, guys. 13,000. How much is taxable dividend? पहले अलोकेट करूंगा, कहाँ अलोकेट करूं? करंट ईयर में हाउ मच? 10,000. अक्यूमुलेटेड में कितना जाएगा? 3,000. बिल्कुल. आई कांट पुट दिस, तो दिस प्लस दिस 13,000. गाइस क्लियर है? एवरीवन, एनी डाउट? नो. Questions. Let's say current year earnings and profit is 5,000. Accumulated earnings and profit is 5,000. Shareholders basis is 5,000. तीनों के तीनों 5,000, 5,000, 5,000. ठीक है. Distributions की कुछ scenarios दे रहा हूं मैं आपको. When your distribution is 15,000, your distribution is 20,000, your distribution is 35,000, and your distribution is $100,000. You have to tell me capital gains in all the four scenario. एक साथ दीजिएगा मेरे को आंसर, एक साथ दीजिएगा. नहीं कीर्ति, we'll go in the sequence only, 1 2. No proportion. Try everyone, you will not understand otherwise. Nimesh, what's your answer? Vinayak, Roli, Lalita, Jyoti. Okay, let's do it. So first is 555. The problem. So 0. And then it's 555. So 5, yes. 555. So this is going to be 20, correct? This is 555. And that's going to be 80. Any question till now, people?
So this is a shareholder. You are making a distribution. Okay. Going forward, instead of calling it current year accumulated reduction of basis and capital gains, we will call it 1, 2, 3, 4. So it's going to be much easier for us to communicate. Okay? We'll call it 1, 2, 3, 4 guys. Okay? Let's see. Current year earnings and profit is 2000. Accumulated earnings and profit is 0. Is it possible that it is 0? Is it possible that this is 0? Yes. 0 क्या नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. There is absolutely no problem with that. ठीक है. Distribution you are making is 20,000. Basis you are having is $5,000. What is going to be your capital gains? What is going to be 4? Sure. One is how much? 2000. Good. What about two? Two क्या आएगा guys? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, zero होगा, बिल्कुल. 3 is going to be 5,000 and 4 is going to be balancing figure of 30,000. बिल्कुल. I hope it is okay. बिल्कुल. In this is taxable. Both of them is taxable. Third is not taxable, and fourth is going to be taxable, which is capital gains. क्या ये बात clear है guys? Yes, no? So step number 4 is not is step number 4 is gains guys. ठीक. एक और question करो. 10, 20, 100, 5. What is capital gains? It's 10, 0, 5, sorry, 20, 5, 6, 5. Step number 3, $5 is going to be taxable. 5 is going to be taxable. I'm just writing a clarificatory note for this. Step 3, or I can say reduction or return of basis or capital is non-taxable. Okay, be careful. MCQs में कभी-कभी they'll try to confuse you with this. We'll do that. Negative भी करेंगे. Negative होगा तो we'll take it 0. Done. आपने मुझे इस क्वेश्चन में you told me that this is going to be 65. 65 is what? Capital gains. Is that okay? Is it possible? Listen carefully, okay? Is it possible step number 4 में capital loss आए? Capital loss कब आएगा? अच्छा, capital loss कब आएगा? When you are increasing the distribution value or decreasing the distribution value? When you decrease the value, right? कोई भी एक वैल्यू बताइए मुझे, कोई भी एक वैल्यू बताइए छोटी सी.
डिस्ट्रीब्यूशन 100 से कम कर दो, बताइए कोई भी वैल्यू। $5। चलो बहुत कम हो गया तो 20 ले लेते हैं, चलिए। कीर्ति ने कहा 20, चलो। तो अगर ये 20 है तो क्या लूंगा मैं? वन क्या आया? 10। टू क्या आया? 10। थ्री क्या आया? 0। फोर क्या आया? फोर क्या आया? 0। लॉस ही नहीं आया यार, क्या करें? और कम करें? कोई और छोटी वैल्यू बताओ आप, चलो। और कम करें? 15 कर लो, चलो। चलिए, वन बताइए। 10। टू बताइए। 5। थ्री बताइए। 0। ये भी 0। अब भी नहीं आया, क्या करें? और कम कर ले, $1 कर लेते हैं, $1 कर लेते हैं। ठीक है, ये वन आया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0। लॉस क्यों नहीं आ रहा? वाई लॉस इज नॉट हैपनिंग? सी, लॉस नहीं, तभी नहीं आएगा नहीं। सी, समझिए बात को। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस ही नहीं आएगा कभी। प्लीज समझिए मेरी बात को। अभी क्या हो रहा है गाइस? प्लीज समझिए, अभी क्या हो रहा है। एज अ शेयर होल्डर आपको कंपनी से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, कंपनी से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। अब जब मुझसे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा वो लॉस कैसे हो सकता है? कंपनी जब भी आपको कुछ पैसे दे रही है, कोई भी आपको पैसे देके जा रहा है, कुछ तो देके जा रहा है ना। 1 रुपया भी देके जा रहा है तो देके तो जा रहे हैं ना। देन हाउ इज इट गोना बी लॉस फॉर यू गाइस? पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो डज इट मीन डज इट मीन इस कंपनी, इस शेयर होल्डर का कभी लॉस ही नहीं होगा? नहीं, लॉस होगा। वेन एवर दिस शेयर होल्डर इज गोइंग टू, नहीं, वेन एवर दिस शेयर होल्डर इज गोइंग टू सेल द शेयर, बिल्कुल सही बात है। वेन एवर यू आर गोइंग टू सेल द शेयर, जब भी आप अपने शेयर बेचोगे तब आपको लॉस होगा। ये बात क्लियर है? एक सवाल आता है यहाँ पे, अरे बट लॉस नहीं हो रहा तो गेन क्यों हो रहा है? दिस इज हाउ द लॉ इज। ऐसा ही है लॉ। लॉ कहता है कि बॉस, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये करेंट ईयर अक्यूमुलेटेड से ऊपर निकल जाएगा, वेन एवर योर डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज मोर देन योर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज सेल और एक्सचेंज की तरह हम ट्रीट करेंगे उसको। तो जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन सबसे ऊपर निकल जाएगा, दैट मीन्स वन फिनिश, टू फिनिश, थ्री फिनिश, वी विल कंसिडर इट मोर लाइक अ सेल और एक्सचेंज। जब भी आप सेल करते हो तो क्या होता है आपको? तब आपको गेन होता है। इसीलिए यहाँ पे गेन होना है। लॉ में कुछ ऐसा गेन या कैपिटल गेन्स नहीं लिखा हुआ है। लॉ सेज whenever the distribution amount is crossing your current year earnings and profit, accumulated earnings and profit, and your basis also, then you will have a sale or exchange treatment. सेल और एक्सचेंज ट्रीटमेंट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द गेन्स। इसलिए हमने वहां से ड्राइव किया है इस चीज। ये बात क्लियर है? तो स्टेप नंबर 4 में आपका कैपिटल लॉस नहीं आएगा गाइस। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर गाइस, क्लियर? अभी नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आएगा, जब भी आप शेयर बेचोगे तब आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। आई एम जस्ट मेकिंग अ क्लैरिफिकेटरी नोट। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस नाउ, बिकॉज कई बार आप जब रिवाइज करते हो, जब आप करोगे ना, तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आई एम राइटिंग दिस, ओके? स्टेप नंबर 4, देयर won't be any capital loss. I'll take that. In step 4, there won't be any capital loss because company is making distributions. Shareholder is not
selling stocks. हाँ, which is the process only. Correct. तो अभी निखिल, योर क्वेश्चन इज, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ निखिल, एंड मेरा बेसिस है $10,000 निखिल, राइट? एंड यू आर सेइंग आई एम सेलिंग माई स्टॉक, हाँ, मैं किसी को बेच रहा हूँ मान लीजिए $12,000 पे, राइट निखिल? तो फिर तो ऑब्वियसली गेन होगा दोस्त, फिर तो ऑब्वियसली गेन होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैंने बेसिस से ऊपर बेचा तो गेन ही होगा ना, कॉस्ट से ऊपर बेचा तो गेन ही होगा ना, लॉस नहीं होगा। क्लियर देखो। और कैपिटल गेन्स इफ वी सेल देन ना ना ना, दिस इज नॉट व्हाट आई टोल्ड। व्हाट आई एम सेइंग हियर निखिल, आप, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ निखिल? कंपनी इज गिविंग यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, कोई बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी इज गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सिंपल वे, कंपनी आपको पैसे दे रही है। क्लियर है मनोज? ठीक। अब जब भी कोई आपको पैसे दे रहा है मनोज, आपको कोई रिश्तेदार आया, आपको कोई आके आपको लिफाफा पकड़ा गया, तो कुछ तो देखेगा ना लिफाफा, कुछ तो देखेगा। कुछ मान लीजिए लिफाफा खाली है, लेकिन उसके बाद ₹1 का सिक्का तो लगा है आपके पास। यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट ना मनोज, ऐसा तो नहीं है कुछ लेके चला गया आपके पास से। तो यू कांट हैव अ लॉस हियर। तो व्हाट आई वाज सेइंग हियर, इन द स्टेप नंबर 1 2 3 4, हियर यू कांट हैव अ लॉस बिकॉज यू आर गेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर मनोज? क्लियर? देखिए क्लियर। Here you can't have a loss here because you are getting a distribution. I was saying here. So general doubt comes in the people's mind that does it means you can't have a loss? You can have a loss when you are selling the shares. Whenever the shareholder is selling the shares, तब तो कुछ भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये क्लियर है? यस नो मनोज, क्लियर है? ठीक। सेम सेम हियर ऑल्सो, अगर आप बेच रहे हो गेन पे तो गेन भी होगा आपको। अगर योर बेसिस इज 10,000 एंड यू आर सेलिंग फॉर 12,000, तो यू विल हैव गेन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। नाउ क्वेश्चन मनोज, इफ दिस बेसिस इज ऑलरेडी एडजस्टेड देन एट द टाइम ऑफ स्टॉक ऑन द स्टॉक प्रॉफिट। हाँ, अगर जीरो हो जाता है तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। वी डू क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो। ठीक बात है सर, मनोज क्लियर है क्वेश्चन? 3 मंथ है या 3 मिलियन है, क्या है ये? 3 मिलियन है। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 10,000 का कर रहे हो? हाँ, तो ओवरऑल देखेंगे ना कीर्ति हम, वी आर गोइंग टू सी द ओवरऑल, वी आर गोइंग टू सी द ओवरऑल। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, एक शेयर होल्डर के लिए नहीं है ना वो पूरा का पूरा, वी विल सी ओवरऑल। अच्छा, आप कह रहे हो 0.8 है, तो आप कह रहे हो टोटल शेयर होल्डर का आपने किया है 0.8, तो सारा 0.8 उसमें से चला जाएगा ना। हाँ, तो सारा 0.8 1 मिलियन में से चला जाएगा आपको। तो वो सारा 10,000 आपका, सारा 10,000 आपका डिविडेंड हो जाएगा, वन में आ जाएगा सारा। ठीक है। क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है गाइस? अच्छे क्वेश्चन है, कुछ फीचर कुछ होगा। ठीक। यूएस में, यूएस में इफ यू आर अ कंपनी, ठीक है, इफ यू आर अ कंपनी, यू विल पे द टैक्स, 21% फ्लैट टैक्स आता है।
इफ यू आर अ कंपनी तो आपके ऊपर 21% फ्लैट टैक्स है गाइस। बट इफ यू आर इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो आपके दो स्लैब्स हैं, ठीक है। एक है फॉर योर नॉर्मल इनकम जो है 10 to 37%, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे होता है कि अगर आपकी इंडिविजुअल हूं अगर मैं, तो मेरी नॉर्मल स्लैब पे लगता है मेरा, नॉर्मल स्लैब पे लगता है मेरा 5 से 25% के स्लैब पे लगता है, 30% के स्लैब पे लगता है। लेकिन अगर मेरी कुछ स्पेशल आइटम है, जैसे कि एलटीसीजी हो गया, किसी क्वालिफाइड डिविडेंड हो गया, जैसे इंडिया में एलटीसीजी पे टैक्स लगता है आपका 12.5% के, सेम ईयर यूएस में टैक्स लगता है 0 to 20%। इज दैट ओके गाइस? तो ये हो गया नॉर्मल स्लैब, ये हो गया प्रेफरेंशियल स्लैब हो गया गाइस। प्रेफरेंशियल स्लैब, कंपनी का कोई प्रेफरेंशियल स्लैब नहीं होता। कंपनी में यू विल टैक्स एवरीथिंग एट फ्लैट 21। ये बात क्लियर है गाइस एवरीवन? एक क्वेश्चन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इज 1000, current year is 100, accumulated is 300, basis is 100. What is capital gains? One, two, three. One हो गया 100. This is going to be 300. This is going to be 100. So this is going to be 500. बिल्कुल। Okay. इसमें how much is your reduction in the basis? How much is the reduction in the basis? 100. That means reduction in the basis का मतलब क्या है? Maybe this distribution is happening 2025 में. So I have reduced my basis. How much is basis left for me? Zero. Next year. So next year, if I look 1st January 2026, what is my basis, guys? My basis is zero. Is this point clear or not? ठीक है। तो अगर मैंने अगले साल अपने शेयर को $200 का बेचा, then what is my gain or loss? 200 is my gain. Because my basis is zero, then whatever I'm selling is my capital gains. Guys, ये बात clear है? Let's try one question on this premise. Year is 2024, 2025. Current year and accumulated, both of them is zero. ठीक है? Basis of the shareholder is 20. Distribution, what they are doing is $100 here, $100 here. Both the years, current year and accumulated is zero. Okay. Scenario clear, guys? Current year's earnings and profit in both the years are 0, 0. Basis in the first year is $20. Distribution in both the years you are making 100. What is capital gains in both the years? Please give me answer in one go.
80, तो पहले इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल, 80 आएगा आपका, एंड नेक्स्ट ईयर योर बेसिस इज 0, तो ऑब्वियसली सारा खत्म। गाइस पॉइंट क्लियर है? You are making a distribution of 200, basis is 30. Next year also you are making a distribution of 200. What is going to be capital gains in this year? What is the capital gains in this year? Correct. This is going to be 170. Basis is 0. So next year is going to be 2.170. Guys, point clear? Excellent. Uh, all the 3 years, current year accumulated are 0. Distribution you are making in the year 2024 is 20, 2025 is 20, and this year is 0. Basis here, guys, is 300. Share you have sold here. You have sold the share for $20. Scenario clear? Guys, scenario clear? I have a question. In all the 3 years, what is your gain or loss? In all the 3 years, what is your gain or loss? Zero, 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 0, 20, 0. ये अलग अलग आंसर्स क्यों है? Wise for answers. Okay. First is going to be capital gains. क्यों नहीं होगा? Because 1, 2 is 0. यहाँ basis कितना बच गया मेरा? I'll reduce this. So basis is going to be 280. बिल्कुल. Next year, what is my basis that? If I reduce 20 also, my basis that is 260. I am selling for 20. 240 is what, guys? Gain or loss? 260 is my basis, no? 240 is going to be my loss. I don't understand. But we discussed, no? Loss is not possible. We discussed, no? Loss is not possible. How loss is happening here? Correct. When you are selling the stock, तो आएगा ही ना लॉस, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. I hope it is okay. So loss is very much possible here. 240 is the loss. So answer is 0, 0, 240 का loss. Guys, clear? Any doubt?
Anyone any question? Should I repeat? Any doubt? Alka, question? Which point, Viren? Viren, sure, I'll repeat the problem. 1 and 2 is clear, Viren. 1 is 0, 2 is 0. So up till here, what is your basis left, Viren? 300 was your basis, Viren. So distribution was 20. So 20 is adjusted. You are left with the basis of 280. Clear, Viren? No. So here you have adjusted Viren 20. So now your basis is left with 260. Your basis is 260 Viren. That means your cost is 260. And you are selling for how much? You are selling for 20. Your cost is 260. You are selling for 20. So what is your gain or loss? You are having a loss now. You are having a loss of 242. That's clear. Any doubt, guys? Should I repeat, guys? Anything is not clear? Right. We can stop here for a break. Some people are messaging me. Sure, Soumya. Soumya, put it in the chat so that everyone can see. No, they will not understand what I'm answering to them. Have you understood 1, 2, 3, 4 point, Soumya? Have you understood 1, 2, 3, 4 what we have done it? We'll discuss it. We'll take a break. Soumya, have you understood? You should ask me 1, 2, 3, 4. Have you done the classes from the beginning? Sure. Okay, we can stop here for a break. Many people is asking, how can you ask my queries? You can connect with me over LinkedIn also. I'll see you guys at 10:55. We'll start. Thank you. Okay, everyone, have you joined? Should we start? Please confirm. We'll start then. Okay, Soumya, are you there? You asked the query. Are you there, Soumya? No question. How the basis works in distribution. Zero. I understand distribution. Basis. And completion does the basis profitability each year. Yes. कितने सारे ग्रुप्स हैं आपके? How many groups are there? One is Anmol sharing, one is Narendra sharing. How many groups are there? Is it the same group? Is it the same group? Narendra. Share once only, na? Don't spam it. Sending it again. The shares only one. Sure, I'll take your question. Okay, allow me a minute. So, Soumya, what you saying? Just give me a minute. Any other question, guys, other than Soumya's question? Any other question other than Soumya's question? Take with this. Guys, tomorrow we'll start timely. Today, थोड़ा overrun हो गया हमारा because of the orientation. Tomorrow we'll start 8:30. Okay.
We'll end at 11:30 Abhishek. I have a question for the basis works in the distribution scenario of zero current year. Distributions are treated as the basis. Yes. Yes, Swami. Yes, Swami. Correct understanding. So the same thing is happening here also, Swami. If current year and accumulated was zero, okay, in this question, and the distribution was 20 only. Both per current year and accumulated were zero, and the distribution was 30. Okay, and basis was how much? 300. 300. So 1, 2, 3, 4. These two are zero. 3 is going to be 30. This is going to be zero. So my basis now, Soumya, is going to be 270. Is that okay, Soumya? Next year also, if the same thing, let's say they are making a distribution of 30. So again, ये 30 से reduce हो जाएगा, it would be 240. My basis will keep on reducing, and whenever I'm going to sell, this is going to be my basis. Is that okay? Any other question, guys, other than this? What we have done till now, we have discussed, is it possible that after current year and accumulated is zero? Is it possible? दोनों zero? Possible. Possible है. Current year and accumulated are zero. Now I will discuss the scenario with you. जहां current year and accumulated हो सकता है negative हो. अगर negative होगा तो क्या treatment होगा? We'll talk about this. ठीक है? एक question करेंगे. Company is making a distribution. Current year is 10, accumulated is 10, distribution is 40, basis is 5. What is capital gains? This is 10, 10, 5 and 15. तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है guys. Both are positive. Is that okay? That's what I'm saying. So what is the scenario you have done? When current year and accumulated both are positive, तो sequence हम क्या follow कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4. Is that okay, guys? Let's do the same thing. Current year is -10. Accumulated is also -20. Distribution you are making 20. Basis is 5. What is capital gains? So what is 1? Can I make it -10? No, I can't do it. It is going to be 0. 2 is going to be 0. Distribution 40. Reduction of basis is 5. So this is going to be 35. Is this clear or not, guys?
पॉइंट क्लियर? ठीक. So when both are negative, this both are negative, then in a way what is the sequence you are following? ये दोनों तो जीरो ही हो गए, तो I'll do that, ज्योति हम अगला वही करेंगे. तो ये 0 0, तो इन अ वे इफेक्टिवली वी आर फॉलोइंग 3 4. ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? पीपल पॉइंट क्लियर? ठीक. लेट्स फर्दर एक्सप्लेन. दिस इज +10, this is -20 guys. Distribution is 40, basis is 5. तो क्या होगा, किया हमने, वी हैव डन प्लस माइनस. क्या किया मैंने ये वाला सिनेरियो? प्लस माइनस. अब क्वेश्चन आता है प्लस माइनस में, शुड वी एडजस्टेड एंड मेक इज -10? नहीं, हम इनको नेट ऑफ नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट. इज दैट ओके? तो व्हाट इज 1 फॉर यू? व्हाट इज 1 फॉर यू? 10. What is 2 for you? 0. What is 3? 5. What is this? 25. Is this clear, guys? Clear what I'm saying? Clear? 9. Should we move? So what is the sequence you are following in this case? 1 3 4 in a way. याद करने की जरूरत नहीं है. You don't need to mug up this. I'm just telling you. ठीक है? Just for your reference है ये. तो in a way effectively मैं 1 3 4 follow कर रहा हूँ. I hope it is okay, guys. Point clear? अब क्या बच गया guys? Which scenario is left? Tell me. Very good. अब सिनेरियो लेफ्ट इज माइनस प्लस. आई होप इट इज ओके. ये थोड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो, आराम से देखिए. ठीक है guys, who have done the classes earlier, please don't answer. Okay, this is -10, this is +20, distribution is 40, basis is 5. Let's do it. यहाँ पे what I have done, this is minus plus, so I will do net of this. What is the net of this guys here? 10. So I will do here 0 10. I will do 0 10. अब क्या आया? 5. And what is that? 25, right? Is this clear what I'm saying? Yes, no, maybe. Pretty clear? I'll talk about this. Sure, Viren. Viren, what I'm saying here, that this is negative, this is positive. Previously, we were not adjusting, Viren. Why? Because this was positive, this is negative. So we were not adjusting this. We were simply following it. But now, since this is negative, this is positive, we will net it off. Net off करा तो क्या बचा? AEP 10 बचा ना सिर्फ मेरा. A1 is 0. नेट ऑफ करने के बाद ये +10 ही बचा ना मेरा सिर्फ. पॉइंट क्लियर? पीरियड व्हाट आई एम सेइंग. एडजस्ट करेंगे ना उसको. -10 को प्लस से एडजस्ट किया तो 0 10 5 25. इज दैट ओके गाइस? तो क्या सीक्वेंस आया गाइस? व्हाट इज द सीक्वेंस? यस नो 2 3 4 आ गया. इन वे सीक्वेंस आ गया 2 3 4. बिल्कुल. आई विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. इज दैट ओके? ठीक. दूसरा सिनेरियो कुड बी हियर. व्हाट कुड बी द अदर सिनेरियो? लेट्स से दिस इज -10 and this is 5. What is the net value coming? -5. तो क्या आंसर आएगा? 0 0 5 30. Is this clear or not? तो क्या आ गया आंसर? 3 और 4 आ गया. यहाँ पे 3 और 4 आ गया गाइस.
I'm just making that in the chart. अगर ये माइनस और प्लस है तो एम आई गोइंग टू नेट ऑफ ईयर? यस. इस वाले केस में नहीं करूंगा. अब यस एडजस्ट करने के बाद इफ द वैल्यू इज कमिंग पॉजिटिव then we are going to follow 2, 3, 4. But if this value is coming negative, then we are going to follow 3 and 4. आपको ये याद नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप ही ने बनाया है. Is that clear what I'm saying? If you have understood the logic, that's good enough for us. I hope it is okay. सिंपल याद रखना है आपको, बस बहुत सिंपल एक चीज याद रखनी है आपको. Whenever current year is negative, will you adjust? Yes. But whenever accumulated is negative, will you adjust? No. Whenever accumulated is negative, we are not going to adjust. See, the whole scenario what we are doing here is क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक दो लोगों ने ऐसे पूछा अभी यहाँ पे. See, point is किस ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप? You are making the distribution in current year. No, guys. Since you are making the distribution in the current year, in the isolation we want to see कि बॉस करंट ईयर में डू यू हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट. इसलिए हम जब भी करंट ईयर पॉजिटिव होता है वी डोंट एडजस्ट because in the isolation we want to see how much is your capacity. Point clear what I'm saying? Yes, no? But if in the current year you are having a negative and accumulative you are having the position positive, we want to see what is your net position in this case to see whether you are making the distribution in that case. इसलिए आइसोलेशन में हम करंट ईयर की पोजीशन देखना चाहते हैं, इसलिए करंट ईयर नेगेटिव होता है then we adjust. अदरवाइज अगर पॉजिटिव होगा वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट. इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. करंट ईयर इज 20, accumulated is minus 30. Are we going to adjust? Current year is minus 10. Accumulated is minus 10. Are we going to adjust? नहीं एडजस्ट क्या ही करोगे, दोनों माइनस से क्या ही एडजस्ट करोगे आप. Current year is minus 10. Accumulated is plus 20. Are we going to adjust? I hope it is okay, guys. एक क्वेश्चन करेंगे guys, just to cover everything. Distribution is 60,000. Everything is in thousands. Okay. Your basis is 15,000. ठीक है. Now current year और accumulated की वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको. Tell me capital gains in all the scenario. 10, 10, minus 20, minus 40, plus 10, minus 40, minus 20, plus. Please tell me capital gain in all the four scenario. एक साथ दीजिएगा आंसर.
Easy. Let's do it. I'll adjust. So if I do 1, 2, 3, 4. So this is going to be 10, 10, 10, 15, 20. Right. Minus as though 0, 0, 15, 45. This is 10, 0, 15, 35. This is 0. एडजस्ट कर दूंगा तो 40 प्लस आ गया 15 5 गाइस पॉइंट क्लियर एक और क्वेश्चन करेंगे we'll do the last question for this distribution is 10 basis is 0 is it possible basis is 0 1 current year and cumulative 10 10 minus 20 plus 40 plus 10 is 40 minus 20 plus 10 plus 50 minus 20 capital gains in all the four scenarios. R is 0. Okay, let's see. So, so yeah, obviously distribution is 10. So this is going to be 1, 2, 3, 4. So this is going to be 10, 0, 0, 0. Correct? So this is going to be 0, 10, 0, 0. This is going to be 10, 0, 0, 0. Good image. This is going to be 0, 0, 0, 10. Very nice. ठीक है ये 0 हो गया 10 हो गया guys here everyone just know ठीक we discussed that when you are making the distribution ठीक है जरूरी नहीं है distribution में when you are giving the distribution it's not necessarily you are giving the cash only. What do you mean by that? That means it is possible that company is giving to the shareholder not only the cash, but you can give also the asset. You are giving the asset, any property to the shareholder. This will also considered as the distribution. I hope it is okay. Now, this asset company has purchased in the year 2020 and company has purchased for $100.
And when the company is giving to the shareholder in the year 2025, then the fair market value is $150. Is the scenario clear, guys? What I'm saying? Yes, no? Question is, what is the distribution value? We will take distribution value as the fair market value, not purchase value or net book value. Is that okay, guys? Everyone? So, if the company is giving cash, company is giving a cash of $50, and company is also giving any asset which they have purchased for $80. And now when they are giving, the fair market value of the asset is $100. Sure, Nimesh, what I'm saying is, it is not necessary that the company is giving only cash to the shareholder. Possible है कंपनी ने कैश दिया और हो सकता है उसके साथ कंपनी हैज गिवन एनी एसेट आल्सो टू द शेयरहोल्डर एज द डिस्ट्रीब्यूशन. इज दैट क्लियर, निवेश? Nimesh, clear? Now the question is, what value should we consider for distribution value? Maybe the company has purchased the asset for $100. That means this is the net book value of the company. And when the company is giving this asset to the shareholder, then maybe the fair market value is $150. Nimesh, point clear? So which one should we take? Should we take $100, 150? We will use 150, Nimesh. So 50, 150 would be considered as distribution value. Clear? So in this question, Nimesh, company is giving you a cash of 50. Company is also giving you any asset for which fair market value is $100. Net book value is $100. What is your total value, guys? Correct. So we will take this also and this also. The total distribution value is 150. I hope it is okay. Correct, people. Fair market value on the receipt date. On the date of receipt. एक ही बात होगा, डिफरेंस क्यों होगा दोनों में? डिफरेंस होना नहीं चाहिए, सेम ही होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ में डिफरेंस क्यों होगा? ऐसा नहीं है कुछ कोई चीज आपको कुरियर की है, वैसा कुछ नहीं होगा. जनरली सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे आप. ओके, लेट्स ट्राई. अभी तक हमने जो किया है, लेट्स ट्राई मर्ज एवरीथिंग. कंपनी इज गिविंग कैश of $100. Company is also giving any asset for which net book value is $30. Fair market value is $20. Current year is minus 20. AEP is 60 plus 60. Shareholders basis is 20. Scenario clear, guys? What is capital gains? Okay, let's see. What is total distribution value?
120. बिल्कुल, this and this 120. ठीक है, should we net it off? Should we net it off? Yes, net it off करेंगे हम इसके अंदर. Now very simple. 1, 2, 3, 4. 1 is going to be 0. 2 is going to be 40 because distribution value ये है. This is going to be 20. So 4 is going to be balancing figure, which is 6. Correct? Guys, clear है? Everyone? ठीक है. 1, 2, 3, 4. Is it possible to have the loss in this? In the step 4, is it possible to have the loss? Is it possible to have the gain here? You will have a gain here. Okay. Gain. Which gain will you have? Capital gains or ordinary gains, guys? Most of the time, it is going to be capital gains. It depends, guys. Okay? It depends how you are holding the stocks. Agar you are holding the stocks as a capital asset, then it is going to be capital gains. But if you are holding the stocks like an ordinary asset, then you will have a ordinary gains. How is it possible? How is it possible that you are holding the stocks as an ordinary asset? Correct. If you are a trader, broker, then it is going to be ordinary. I hope it is okay. Point clear, guys. यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है गाइस, कोई भी डाउट? रिपीट करूं कुछ? ठीक, I'll stop it here only guys. ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा ट्रिक स्टार्ट करेंगे. तो आपको कोई प्लीज आज पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से कल पूछ लीजिएगा. टुमारो विल स्टार्ट टाइमिंग, विल स्टार्ट 8:30 गाइस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.